Here double integration, number of variable 2, hence we get double integration. Rules as like all limit constant है, then according to preference integrate with respect to first x and then y. Okay, but rule number second, here limit in x variable, then integrate with respect to y, keeping x constant, and finally integrate with respect to x. But limit in y variable है, then integrate with respect to first limit in y variable, then integrate with respect to x first, keeping y constant, and finally integrate with respect to y. Finally integrate with respect to y. Example, evaluate integral 0 to 1 1 by root of 1 minus x square into 1 minus y square dx dy. Now here all limits are constant, hence according to serial order, first integrate with respect to x, then y, but before that you write down this root sign separate, dx dy, root ab we can write separate root by formula. Here integrate 0 to 1, first dx है तो integrate with respect to x, keeping other than x constant, hence take y term outside the first integration, first integrate with respect to x, keeping y constant, the term in y take outside. Integral 0 to 1 1 by root of 1 minus y square dy. This answer formula is sin inverse x limit 0 to 1. Here formula integration of 1 by root of a square minus x square dx. Answer sin inverse x by a. Answer sin inverse x by a. 0 to 1 root of 1 minus y square dy. First put upper limit, sin inverse 1, sin inverse 0, but sin 90 1 होता है, hence sin inverse 1 pi by 2. This answer also 0 to 1. Actually all limits are constant, we can integrate at a time both. Okay, this answer pi by 2, sin 0 0, hence sin inverse 0 is also 0. Pi by 2 constant outside, वापस integration of this term is sin inverse y, formula given here, a की वैल्यू 1 है तो 0 to 1 pi by 2 sin inverse 1 minus sin inverse 0 sin inverse 1 pi by 2 minus 0. Answer pi square by 4. This is required answer. Answer is, so here sin inverse y limit 0 to 1, upper limit minus lower limit, sin inverse 1 pi by 2, sin inverse 0 0, and pi square by 4 is required answer of this exam. Now see here integration, here
लिमिट्स इन एक्स वेरिएबल, तो इंटीग्रेट फर्स्ट विथ रिस्पेक्ट टू वाई. लिमिट इन x variable, hence first integrate with respective लिमिट x है तो पहले विथ रिस्पेक्टिव y, कीपिंग x constant, keeping x constant 0 to 3. Here x cube constant outside, and then 0 to y square dy. By formula, integration of y raised to n dy, y raised to n plus 1 by n plus 1, because of definite integration no plus c. Here 0 to 3 x cube dx, this integration y cube by 3, 0 to root 4x, 1 by 3 constant outside. Now put there upper limit minus lower limit, क्यूब 0 का क्यूब यानी कि रूट 4 यानी कि 2, रूट 4 यानी कि 2 रेस टू 3 बाय 3. नाउ 0 to 3 x cube, this x raised to half, okay, x raised to half raised to 3 dx. Here 2 cube by 3, integral 0 to 3 plus 3 by 2 dx. Answer 8 by 3, integral 0 to 3 after LCM 9 by 2 dx. 8 by 3, answer x raised to 9 by 2 plus 1, 11 by 2, 11 by 2, limit 0 to 3. Answer 8 by 3, this is 2 by 11 and 3 raised to 11 by 2 minus 0, this is required answer. This is required. Now here limit in y variable, limit in y variable, hence integrate with respective x first, keeping y constant, 2 to 5 dy 0 to y, या इंटीग्रेट विथ रिस्पेक्टिव x है, कीपिंग y कांस्टेंट. तो बाय फॉर्मूला इंटीग्रेशन ऑफ x square plus a square dx, आंसर 1 by a tan inverse x by a. तो 2 to 5 dx, sorry dy, this answer tan inverse x is variable, constant a square के जगह पर y square है तो y and 1 by y, limit 0 to y. 2 to 5 1 by y dy. Now upper limit minus lower limit, tan inverse y by y, put x equal to y and x equal to 0, 0 by any term is 0. So tan inverse 0. 2 to 5 1 by y dy,
तब तक आंसर tan इनवर्स 1, tan इनवर्स 0, tan इनवर्स 0 0, tan इनवर्स 1 pi by 2. Take pi by 2 outside, 2 to 5, 1 by y dy, pi by 2, 1 by y is log y, 2 to 5, answer pi by 2 log 5 minus log 2, pi by 2 log 5 by 2. और एक बार देखो 0 to 2 1 by y dy, this put upper limit here minus lower limit, y cancel, tan inverse 1 is pi by 2, sorry tan inverse 1 pi by 4. Okay, so pi by 4 outside and tan inverse 0 0, here 1 by y, log y integration, upper limit minus lower limit, log m minus log n से आंसर ये आ गया और this is pi by 4 is required answer. Here limit in y variable, limit in y variable, hence integrate first with respective x, keeping y constant, keeping y constant, integral 0 to 1, here dy outside with respect to x कर रहे, keeping y constant 1 plus y square, and out of this y and 1 is constant, y and 1 is constant, plus x square dx. By formula integration of 1 by a square plus x square dx, answer 1 by a tan inverse x by a. Okay, here a square is equal to 1 plus y square. So a is equal to root of 1 plus y square. Answer 0 to 1 dy 1 by root of 1 plus y square tan inverse x by root of 1 plus y square 0 to root of 1 plus y square. Upper limit minus lower limit. Okay, upper limit minus lower limit. ये root 1 plus y square cancel with this root 1 plus y square and put x equal to 0 here. देखो by formula 1 by a tan inverse x by a, here a square is 1 plus y square, a is equal to root 1 plus y square. So according to formula 1 by a tan inverse x by a, but a is equal to root 1 plus y square. डाल दो इधर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट. अपर लिमिट डालोगे तो ये टर्म कैंसिल होकर 1 आ जाएगा. दिस इज tan इनवर्स 0, but tan inverse 0 0, tan inverse 1 pi by 4, this pi by 4 take outside and remain 0 to 1 root of 1 plus y square dy. Okay, now formula pi by 4 1 by root of 1 plus y square मतलब log of y plus root of 1 plus y square. ये तो फॉर्मूला से है. ओके, ये तो फॉर्मूला से है. बाय फॉर्मूला इंटीग्रेशन ऑफ
1 by root of 1 minus x square dx, 1 by root of 1 plus, या इधर a square minus x square, a square plus x square and 1 by root of x square minus a square dx. ये टोटल आपके 3 फॉर्मूले हैं। जहाँ माइनस एक्स स्क्वेयर है उधर साइन इनवर्स x बाई ए आंसर, अदरवाइज लॉग x प्लस, जहाँ माइनस एक्स स्क्वेयर है वहाँ साइन इनवर्स x बाई ए, अदरवाइज लॉग x प्लस। यहाँ क्लीन करो, फेविकॉल लगा दो और ये टर्म चिपका दो, एज इट इज लिख दो। ओके, तो अपना इधर ये फॉर्मूला की ज़रूरत है। ओके, और इसीलिए 1 बाय रूट 1 प्लस वाई स्क्वायर, आंसर लॉग ऑफ y प्लस सेम टर्म, मतलब लॉग ऑफ x प्लस सेम टर्म। तो सेम ईयर बाय फॉर्मूला पाई बाय 4 अपर लिमिट, तो लॉग ऑफ 1 प्लस रूट ऑफ 1 प्लस 1 माइनस लोअर लिमिट के लिए ये 0 एंड 1 प्लस 0। ओके, आंसर पाई बाय 2 लॉग 1 प्लस रूट 2 माइनस log 1, but log 1 is 0, answer pi by 2 log of 1 plus root 2 is required integral. Now here limit in x variable, limit in x variable, hence integrate with respect to y, keeping x constant, integral 0 to 2 dx, take outside, 0 to 1 by root 2 root of 1 minus x square dA, here dy divided by root of 1 minus x square minus y square. Okay, by formula integration of 1 by root of a square minus x square या a square minus y square dy, आंसर साइन इनवर्स y by a, इंटीग्रल 0 to 2 dx, आंसर साइन इनवर्स y by root 1 minus x square, 0 to 1 by root 2 root 1 minus x square, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो यहाँ आप डालोगे साइन इनवर्स या 1 बाय रूट 2 रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस साइन इनवर्स 0, दिस कैंसल, साइन इनवर्स 0 0, 0 to 2 dx, साइन इनवर्स 1 बाय रूट 2 मतलब 45 डिग्री, बिकॉज साइन 45 1 बाय रूट 2 आंसर। ओके, साइन 45 1 बाय रूट 2, पाई बाय 4 टेक आउटसाइड, इंटीग्रल ऑफ dx इज x, 0 to 2, अपर लिमिट minus lower limit, answer is pi by 2, answer here I is equal to
इंटीग्रल 0 to 2 pi इंटीग्रल 0 to a cos theta r dr d theta limit in theta variable, hence integrate first with respective r, keeping theta constant, 0 to 2 pi d theta 0 to a cos theta r dr 0 to 2 pi d theta r integration r square by 2 0 to a cos theta 1 by 2 outside 0 to 2 pi d theta, put upper limit a square cos square theta minus 0, upper limit minus lower limit 1 by 2 a square constant outside 0 to 2 pi cos square theta d theta by formula cos square a half 1 plus cos double up angle 1 by 2 a square 0 to 2 pi 1 by 2 1 plus cos 2 theta d theta a square by 4 1 मतलब d theta इंटीग्रेशन थीटा और दिस इज sin 2 theta divided by 2 0 to 2 pi a square by 4 अपर लिमिट डालो 2 pi sin 2 pi 4 pi 0 ताकि sin n pi 0 sin 0 0 ओके। तो ये दोनों लिमिट के लिए सेकंड टर्म 0 और ये भी 0, आंसर आ गया पाई ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 पाई ए स्क्वायर आंसर आ गया। और एक बार सॉरी देखो, दिस इज अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट डालकर आ गया कॉस स्क्वायर थीटा बाय फॉर्मूला कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 by 2 1 प्लस कॉस डबल ऑफ एंगल हियर 2 थीटा है तो 1 प्लस कॉस 2 थीटा 1 डी थीटा का इंटीग्रेशन थीटा कॉस का इंटीग्रेशन साइन 2 थीटा बाय 2 अपर लिमिट पुट करोगे तो साइन 4 पाई आता है बट साइन n पाई 0 होता है, साइन 0 0 होता है। तो ये टर्म दोनों लिमिट के लिए 0 हो गया। ओनली पुट लिमिट इन फर्स्ट पार्ट तो आंसर 2 पाई और ये ए स्क्वायर बाय 4 तो टोटल आ गया पाई ए स्क्वायर बाय 2 इज इंटीग्रेशन।